अज़ीज़ तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम। सज्जाद हुसैन एक दफ़ा फिर हाजिर है आपकी खिदमत में, और हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन डिराइव की थी। एक इसमें गलती हो गई थी, वो मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ और इसको हम रेक्टिफाई कर लेते हैं। गलती ये थी कि हमने यहाँ पे जो टाइम निकाला था, दिस टाइम वाज इक्वल टू 2 टाइम्स v sin थीटा ओवर g, और रेंज s निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और टाइम में जब हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो यहाँ पे मैं v लिखना भूल गया, तो इसको मैं अभी रेक्टिफाई कर लेता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे टू वी लिखना चाहिए, जो मैं मिस कर गया था, और यहाँ पे ये वी स्क्वायर हो जाएगा। सो रेंज विल बी इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा जनाब, तो अगर मैं समराइज़ करूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था, तो कल हमने यहाँ पे 3 इक्वेशंस डेराइव की थी प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से। सबसे पहले हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल विच वाज h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2g इंटू साइन थीटा होल स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन हमारे पास रेंज की थी, दैट इज़ वी स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा, और मैक्सिमम रेंज इसी से हमने निकाला था। व्हेन वी टुक द साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो मैक्सिमम रेंज वाज वी स्क्वायर अपॉन जी, और उससे हमने ये कैलकुलेट किया था कि व्हेन साइन 2 थीटा विल बी 1, so 2 theta will be equal to 90, so theta will be 45. That means whenever a projectile is fired at an angle of 45 degree, it will acquire the maximum range. उसके बाद हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट की थी, दैट वाज इक्वल्स टू 2v ओवर जी साइन थीटा। तो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास बेसिकली थी, और ये हमने डिराइव की थी अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। और मैंने कहा था कि हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि विजिबल हो जाए, और साथ ही इसकी पिक्चर भी हम कॉपी कर लेते हैं। ये इसकी पिक्चर आ गई। ओके, इसको हम थोड़ा मूव कर लेते हैं, लेट अस एडजस्ट लिटिल बिट, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं सो इट विल बी मोर विजिबल। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि a stone is thrown from the top of a building upward at an angle of 30 degrees to the horizontal with an initial speed of 20 meter per second as shown in the figure. The height from which the stone is thrown is 45 meter above the ground. So how long does it take the stone to reach the ground? अब यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन हमें मालूम है उसको हम टेबुलेट कर लेते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन मालूम है एंगल थीटा
at which the projectile is fired, that is 30 degree C. इसकी velocity मालूम है, which is 20 मीटर पर सेकेंड. तो हम इसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं. Vx will be equals to V cos theta, which will be equals to 20 meter per second multiplied by cos 30. Cos 30 is 0.866. So let us calculate this one. So Vx will be equal to 30 cos multiplied by 20. So it comes out to be 17.32. 17.32 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली हम यहाँ से Vy निकाल सकते हैं. Vy will be equals to V sin theta. That means it will be equals to 20 into sin 30. Sin 30 is half. So यहाँ से हमारे पास Vy की वैल्यू हो जाएगी 20 divided by 2 is 10 meter per second. अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट O to let it be point B. The highest point here, let it be point A. So first this particle will go up from O to A and then A to B. तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आएगी. दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट this will be equals to T is 2V over G into sin theta. So total time will be equals to 2 times V is equals to 20 meter per second, G is 9.81 into sin 30. So it will be around 2 multiplied by 20 is divided by 9.81 multiplied by 30 sin. So the answer comes out to be time is equals to 2.03 second. So this is the time of flight of the projectile. It will take to reach from point O to point B. तो यहाँ पे हमारे पास टाइम आ जाएगा 2.03 सेकेंड. उसके बाद from point B to, say for example it reaches ground. So we want to know what will be the time required to reach this object from point B to the ground. So suppose, sorry, now we can calculate the time required to reach from point B to ground. Now we want to calculate the time required
to reach to the ground. अब इस जोन में हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इन वाई डायरेक्शन दैट विल बी दी सेम, वो हमने कैलकुलेट की हुई है 17.3103231, it should be 17.32 meter per second. Acceleration will be of course g, which is 9.81 meter per second square. This is downward, so this g will be positive. And height is given as 45 meter. तो हम इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं s इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और जी टी स्क्वेयर वट एवर. तो s इज़ 45 meter, vi in vertical direction is 17.32 into t plus half, g is 9.81 times t square. So that will be equals to 4.905 t square plus 17.32 t minus 45 equals to 0. So now this is a simple quadratic equation, and we can solve our quadratic equation. We know that in quadratic equation the formula is minus b plus minus under root b square minus 4ac, and the whole thing is divided by 2a. तो अगर हम इस पे सब्स्टिट्यूट कर दें, so this time t will be equals to minus b, which is 17.32 plus minus b square, that means 17.32 square minus 4, a is 4.905 and c is minus 45. Here is the under root sign. Divided by 2 times a, which is 4.905. So t will be equal to minus minus plus, so it will be 4 into 4.905 multiplied by 45 plus 17.32 square. So this is the whole thing under root. This comes out to be 34.4. So this radical sign gives us 34.4, and here is 17.32 divided by 2 times 4.905. So in case of plus, it will be plus 17.32 divided by 9.81. So the first time comes out to be 5.27 seconds, and the negative time
that is not material. $34.4 minus 17.32 is divided by 9.81 with a negative minus 1.74. So here this time is equals to 5.27 second. So total time will be 5.27 plus what was our time before, 2.03, so plus 2.03, so total time comes out to be 5.27 plus 2.03. The answer comes out to be 7.3 seconds. So that means after 7.3 seconds this body will hit the ground. अब हम इस पे और भी चीज़ें मालूम कर सकते हैं. मसलन अगर ये पूछा जाए कि जी हाउ फार फ्रॉम द बिल्डिंग इट विल गो, एक लॉजिकल क्वेश्चन हो सकता है. हाउ फार द प्रोजेक्टाइल कैन गो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ये रेंज निकालनी पड़ेगी. और फिर उसके बाद वेयर एवर इट इज गोइंग, फॉर एग्जाम्पल हियर, सो द सेकेंड पॉइंट विल बी from this point to this point, let it be x. तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास रेंज के लिए इक्वेशन मौजूद है. रेंज इज v स्क्वेयर अपॉन g इंटू साइन 2 थीटा. So let us find the range first. Range is equals to v square upon g into sin 2 theta. ये हमें मालूम था. The velocity of this particle was 20 meter per second. G was 9.81 meter per second square. And then sine 2 theta is 30 degrees, so it will be equal to 20 square means it will be 400 divided by 9.81 into sine 60. So that will be equals to 400 divided by 9.81, and sine 60 is 0.866.
So this range will be equal to 400 multiplied by 60, 400 multiplied by 60 sine equals to this divided by 9.81. So this will be 35.31. So this range will be 35.31 meters. Now we know that the horizontal component of the velocity Vh was, or Vx was 10 meters per second. And time we just calculated 5.27 second. So the time was 5.27 second. So distance travel will be equals to horizontal velocity multiplied by time. So this will be equals to 5.27 multiplied by 10. So this horizontal distance S will be equals to 52.7 meters. So the total distance will be equals to the range, which was 35.31 meters plus 52.7 meters. So this is plus 52.7 equals to 88, almost 88.1. So this will reach to 88 meters. So this is how we calculate, or we solve the numericals for projectiles, because projectile means the body is moving in 2 dimensions, so we have to analyze in 2 dimensions. And normally the binding parameter is the time, so equating the time we can get the another value. इसके बाद हम आते हैं जनाब, एज हमने डिस्कस किया था कि इलास्टिक कोलिजन पे आएंगे, and we will study the collision of 2 elastic bodies. यहाँ पे हम एक मिसाल ले लेते हैं कि सपोज देयर आर 2 elastic bodies, they are moving with 2 different velocities, then they collide, and okay, let me pull these figures.
ओके, सो यहाँ पे हम ये स्टडी करते हैं कि वी आर facing a problem like there are two perfectly elastic bodies. अब इसका क्या मतलब होता है when we say they are perfectly elastic bodies? So perfectly elastic bodies का मतलब ये होता है कि the law of conservation of energy and the law of conservation of momentum holds for this collision. यानी there is no loss of momentum and no loss of energy. Though these two spheres, they are perfectly elastic. So suppose the first body m1 is moving with a velocity of v1 I, and the second body m2, it is moving with another velocity v2 I. Then they collide, and after collision these bodies are moving with two different velocities, say that is v2I, and let it be a little bit change. Let me see if that picture is there. Yeah. So after collision, this is the picture. So this should be deleted. Yeah. So the condition is after collision, the body m1 will be moving with velocity v1 f, and the body m2 will be moving with velocity v2 f. So अब कंडीशन हमारे पास क्या है, जो हमें इसका नैरेटिव डेवलप करना है उसका ये है कि लेट अस सपोज देयर आर टू particles or two bodies, perfectly elastic bodies, m1 and m2. These are the masses, yani m1 is the mass of the body 1, m2 is the mass of the body 2. The body having mass m1 is moving with initial velocity v1 I. The body with having mass m2 is moving with velocity v2 I. When they collide, at that moment these are two joint spheres m1 plus m2. And after collision, the body m1 will be moving with velocity v1f, and the body m2 will be moving with velocity v2f. So now we know that initial velocities are known. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो known parameters हैं हमारे पास, वो हमारे पास यहाँ पे known parameters होंगे. v1i is known, m1 is known, similarly m2 is also known, and v2i is also known. So that means we know that a mass of m1 is moving with a known velocity v1, mass m2 known is moving with a known velocity of v2i. Then they collide, and after collision the mass m1 is moving with velocity v1f, and m2 is moving with velocity v2f, but these two are unknown. So these two quantities are unknown. Is it possible for us to calculate the or to know these two velocities? Yes, because we know we have two unknowns, v1f and v2f, and we can develop two equations. कौन सी दो इक्वेशन हम बना सकते हैं? According to law of conservation of momentum, according to law of conservation of energy. तो यहाँ पे एनर्जी जो है, दिस इज प्योर काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज इक्वल टू हाफ mv². और मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. तो चले इक्वेशन डेवलप करते हैं. So let us say, okay, according to law of conservation of momentum, according to law of conservation
of momentum. क्या होगा? Momentum of the first object, that means m1 into its initial velocity v1I plus m2 multiplied by v2I. This will be equals to m1 into v1f plus m2 into v2f. So ये हमारे पास है equation number 1. Then according to law of conservation of energy, हम कह सकते हैं energy of the first particle before collision is half m1 into v1I square plus half into m2 into v2I square. That will be equals to half into m1 into v1f square plus half into m2 into v2f square. अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. हाफ कॉमन ले लें, इट विल बी कैंसल्ड आउट. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं देयरफॉर m1 into v1 I square plus m2 into v2I square, that will be equals to m1 into v1 f square plus m2 into v2f square. अब हम थोड़ी सी मैथमेटिकल जगलिंग कर लेते हैं. m1 के पैरामीटर्स एक तरफ कर लेते हैं. इट विल बी m1 इंटू v1 I स्क्वेयर माइनस m1 इंटू v1f स्क्वेयर. दिस विल बी इक्वल्स टू m2 इंटू v2f स्क्वेयर माइनस m2 इंटू v2I स्क्वेयर. यहाँ से m1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, सो इट विल बी v1I स्क्वेयर माइनस v1f स्क्वेयर. दिस विल बी इक्वल्स टू m2 इंटू v2f स्क्वेयर माइनस v2I स्क्वेयर. अब हम इसको इक्वेशन को ओपन कर देते हैं. ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. सो व्हाट वी विल गेट, दिस विल बी इक्वल्स टू m1 इंटू v1I प्लस v1f इंटू v1I minus v1f, and that will be equals to m into v2f plus v2I into v2f minus v2I. और अगर हम इस इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दें बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमने कैसे लिखा था? लेट्स राइट इक्वेशन नंबर 1 अगेन. m1 इंटू v1 I प्लस m1 इंटू v1 f was equals to m2
into V2I plus M2 into V2F। तो यहाँ से अगर M1 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचता है, V1I प्लस V1F, और यहाँ से बचता है M2 कॉमन ले लें तो इट विल बी V2I प्लस V2F. Say this is our equation number 3. So if equation number 2 is divided by equation number 3, so what we will get? Divide equation number 2 by equation number 3. So what we will get, m1 cancel, plus factor is cancel, so on the left hand side it will be v1I minus v1f will be equals to v2f minus v2I. So this will be our equation number 4. Now a little mathematical juggling, that means taking the value of v1f from here and putting back in equation number 1. So what we will get, we will solve this equation. So now to cut the time short, I have already done this exercise, and at the end what we get, so finally here what we get is v1f, sorry, a little bit go down, it would be too complicated, too congested. So I can say v1f, this will be equals to m1 minus m2 over m1 plus m2 times v1I plus 2 times m2 over m1 plus m2 times v2I. ये हमारे पास से equation number 4, and similarly v2f will be equals to 2 times m1 upon m1 plus m2 into v1I plus m1 minus m2 over m1 plus m2 times v2I. So this is our fifth equation. Now very interesting results we can obtain. अब हम ये देखते हैं कि हमने ये सपोज किया कि देयर आर 2 इलास्टिक बॉडीज जिनके masses थे m1 and m2. What if say that m1 is equal to m2, that means say it is m, क्या होगा? अगर दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों पार्टिकल, उनका मास सेम है, तो चलें लिखने की कोशिश करते हैं. v1f, दिस विल बी इक्वल्स टू m1 माइनस m2, दोनों m हो गए तो इट विल बी 0.
यहाँ पे भी 2m हो गया, m प्लस m 2m हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये हो गया 2i, तो ये हो गया, सॉरी, सो हमारे पास v1f क्या बचा, इट विल बी v2i, अगेन मैं वही गलती कर रहा हूँ, इट विल बी इक्वल्स टू v2i। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये आ जाता है। v2f के लिए क्या हो जाएगा, जाहिर है यहाँ पे हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाई m प्लस m इज 2m, तो 2m कैंसिल, v2f विल बी इक्वल्स टू v1i, और ये माइनस हो गया तो ये ज़ीरो हो जाएगा, दैट मीन्स v2f विल बी इक्वल्स टू v1i। क्या मतलब हुआ कि इफ देयर आर टू पार्टिकल्स हैविंग सेम मास, तो टकराने के बाद दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है उसने अपनी वेलोसिटी दूसरे को दे देनी है और दूसरे ने अपनी वेलोसिटी पहले को दे देनी है, दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, दैट्स व्हाई v1f इज इक्वल्स टू v2i और v2f इज इक्वल्स टू v1i। तो ये दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि से this m1 is very very small than m2, यानी एक बहुत ही छोटा पार्टिकल एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को हिट कर रहा है, यानी ये समझ लें एक बच्चा एक ट्रेन को पुश कर रहा है, एक ट्रेन चल रही है और बच्चा जाके ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, क्या होगा, बच्चा तो ट्रेन को रोक नहीं सकता, ट्रेन उसको कुचल जाएगी। तो इसमें क्या होगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके देखें कि किसकी वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, और फिर इसका कन्वर्स कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जाके एक छोटे ऑब्जेक्ट को हिट करता है तो क्या होगा। तो ये केसेस आप खुद से स्टडी करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।